Okay. So, Dr. Jaitlia, are you doing the first presentation or Dr. Sachin? No, it doesn't matter, sir. Okay. now I have postponed my Okay. other program here. So Okay, fine. Then we'll go with Dr. Sachin Dure. Yeah. To be the first presenter. Okay, so it's already 4 o'clock. So I'll welcome all the viewers. Thank you all for joining us for this another education series of continuing nursing education. तो आप लोग अपने फ्रेंड्स नर्सेस उनको भी इंफॉर्मेशन देना और प्लीज encourage them also to join this nursing education program. So it's mostly every second Friday between 4 to 5 p.m. So हमने एक YouTube link share किया था. So this program can be viewed by all of you on this YouTube link, or you can just search महाराष्ट्र स्टेट NNF. अगर आप YouTube पे महाराष्ट्र स्टेट NNF सर्च करोगे और तो you will find this link live. और अगर बाय चांस आपका ये प्रोग्राम मिस हो गया है एंड और बिकॉज ऑफ कुछ कारणों से आप देख नहीं पाए, तो आप वापस जाके भी ये लिंक महाराष्ट्र से NNF सर्च करके ये डेट का प्रोग्राम व्यू कर सकते हैं कभी भी. सो ये रिकॉर्डेड है and it will remain on YouTube. So last time also we had two very interesting topics. One was on basic resuscitation of a newborn, and there was and surgical problems in a neonate. So similarly, following the same lines, today also we have two interesting topics for all of you. So I request Dr. Jaisal Sheth, who is the chairperson for this program, to introduce our expert and give a brief overview of what the topics are. Thank you, Dr. Jaisal. Yeah. Thank you, Dr. Ashish. So good afternoon, everyone, and thank you for joining today. We all are very passionate to actually educate and spread the words and, kind of try to gain the knowledge. रोज हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं, रोज हम लोग कितने सारे शुगर्स हर शिफ्ट में चेक करते हैं, लेकिन अगर हमें पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कितना फ्रिक्वेंटली करना है, उसके टेक्निकल ट्रबल शूटिंग्स क्या है, तो वो काम करने में हमें मजा भी आएगा और हम अच्छे से करेंगे. तो आज हमारे साथ बहुत तो रिनाउंड स्पीकर्स है जो ये सारी चीजों को हमें बहुत डिटेल्स में बताएंगे. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू एक्चुअली वेलकम माय वेरी डियर फ्रेंड डॉक्टर प्रीता जोशी. Dr. Preeta Joshi is a very, very well-known educator in the Maharashtra as well as in the country. Dr. Preeta Joshi has been trained from multiple countries, from Australia, Africa, as well as Canada. She is trained in 3 different super specialty of the intensive care: pediatric intensive care, neonatal intensive care, and cardiac intensive care. Madam बहुत सारा transplant अपनी hospital में करती हैं, and she is a very, very passionate educator. So और बहुत सारे अचीवमेंट्स है मैडम के. सो वेलकम डॉक्टर प्रीता जोशी टू एक्चुअली बी एन एक्सपर्ट इन दिस सेशन. आप सब लोग अपने क्वेश्चंस पूछिए, कुछ नहीं समझा तो अपने यूट्यूब लिंक में जो नीचे चैट बॉक्स है उसमें क्वेश्चंस डालते जाइए. हम वो क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली पढ़ते रहते हैं, उसके आंसर्स वहां पे भी करेंगे और एंड में हम एक्सपर्ट से और हमारे स्पीकर से भी पूछेंगे अगर कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आई तो. और आप फ्यूचर में कौन से टॉपिक सुनना चाहते हैं उसके भी आप अपने अभिप्राय वहां पे डाल सकते हैं. सो ओवर टू यू डॉक्टर प्रीता. You can introduce both the speakers and take it from there. Thank you, Jaisal. That was a very kind introduction. Thank you so much. And thanks, Ashish and Maharashtra NNF for having me here. So you can hear me. The hospital announcement has come up at the same time. Okay. So I would first like to introduce all of you to Dr. Sachin Dule, who is Assistant Professor, Department of Pediatrics at MGM Medical College and Hospital, Aurangabad, and with a vast experience in neonatology as well. So we are going to discuss the 5th vital sign. We know that we always tell in the NICU to look at the temperature, the pulse rate, which is the heart rate, respiration, the blood pressure, and then one of the most important signs is to have the saturation. So today we will learn how to monitor, troubleshoot, and कैसे interpret करते हैं pulse oximeter को. So over to you, Dr. Sachin. Thank you, Preeta ma'am. And first of all, thanks to NNF Maharashtra just for giving me a chance
to talk at this dais. My topic is how to monitor, how to check the troubleshooting, and how to interpret the readings of the pulse oximeter in an ICU. Okay. So I'm going to discuss this topic in under the following headings. First, we will discuss the parts of pulse oximeter, then how to use it, then what are the limitation of the pulse oximetry, and how to improve the oximeter's signal, and then what are the indications to use this pulse oximetry. So first of all, we go in some details of the how it looks, what are the readings that we get on the pulse oximeter. वहाँ पे हमको 3 readings मिलते हैं normally. एक तो pulse oximeter saturation, second thing is the pulse rate, and third thing that we normally ignores is the perfusion index. Saturation, we know that more than 90% होना चाहिए, 95 से ऊपर नहीं होना चाहिए NICU में. Pulse rate, normally we know that newborns have the pulse rate between 100 to 160. Less than 100 से हम bradycardia, more than 160 is tachycardia, newborn tachycardia. And one more thing is perfusion index, which ranges from 0.02% to 20%. So this saturation, saturation हमेशा हमको saturation देखने की जरूरत है ऐसा जरूरत नहीं है. Saturation के टाइम पे वहाँ पे एक ऑडिबल सिग्नल भी आ जाता है. तो ऑडिबल सिग्नल के साथ जितना एम्पलीट्यूड, जितना पिच का वो सिग्नल रहेगा, उतना सैचुरेशन इज इन द नॉर्मल रेंज. अगर उसका पिच धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका मतलब है सैचुरेशन इज फॉलिंग. ठीक है. तो हमेशा हमको सैचुरेशन की तरफ देखना ही है ऐसा जरूरी नहीं है. अगर हम हमारे पीछे बेबी है और उसको पल्स ऑक्सीमीटर लगा है और उसका सैचुरेशन का पिच अगर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इट मीन्स दैट योर सैचुरेशन इज फॉलिंग. Similarly, pulse rate, normally we are getting waveforms on the monitor, and that waveforms amplitude of that every wave denotes the strength of the wave. It denotes the perfusion of that baby. Okay, and जैसे ही उसका amplitude, उसका strength कम होते जाता है, it shows that the baby's pulse volume is going on lower side. So this pulse oximeter gives us a good idea regarding the perfusion and oxygen level of the baby. And sometimes they give the early idea. बहुत पहले हमको आइडिया देते हैं कि बेबी का परफ्यूजन, बेबी शॉक में जाने के पहले, बीपी कम हो जाने के पहले हमको वी आर गेटिंग दैट परफ्यूजन कम हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, उसके चांसेस ये पल्स ऑक्सीमेट्री से हमको अर्ली पता चल जाता है. थर्ड पैरामीटर इज द परफ्यूजन इंडेक्स. नॉर्मली वी ignores this perfusion index, but it's a very good parameter we use for in the babies with shock. And अगर उसको देखा जाए कि हम ये क्या रहता है perfusion index, it's just a ratio of कितना blood move हो रहा है और कितना blood static है. That is pulsatile blood flow and static blood flow, and it indicates the strength. जितना perfusion index ज्यादा रहेगा, उतना ज्यादा perfusion अच्छा है वो organ का. And it's perfusion normally we use in hypoxia and in shock. Okay, and we know that it's बहुत अगर poor shock में patient रहेगा, अगर patient shock very bad shock में रहेगा, तो perfusion index का lower side यानी 0.02% दिखेगा. and in which कुछ monitor में ये directly you will get the number, or in some monitors you will get just the pleth. तो जितना छोटा pleth रहेगा उतना poor PI रहेगा, जितना अच्छा 20 के आसपास रहेगा, तो it means that you are getting a good perfusion. And this perfusion, जैसे हमारा saturation का है कि more than 90% होना चाहिए pulse rate का, and 100 to 160 के बीच में होना चाहिए, but perfusion index it varies from patient to patient, and patient's condition to condition. It varies from patient's side. हमने इसको foot को लगाया, toes को लगाया, या finger को लगाया है, या earlobe को लगाया, इसके बाद vary हो जाता है. So हम जब भी उसको patient को pulse ox लगाएंगे, उस टाइम का जो रीडिंग रहेगा, वो रीडिंग को हमको स्टैंडर्ड मानना है, और उसके बाद उसको we have to monitor. उसके बाद ये perfusion index improve हो रहा है या नीचे आ रहा है. If it improves, so it means that your treatment is working. If it is again going down, it means that your patient is deteriorating. So and whenever the perfusion index less than 0.4%, it shows अगर PI 0.4 से नीचे रहेगा, तो it means that very poor perfusion. And whenever there is a poor perfusion,
your pulse oximetry will not work properly, and the readings of the pulse oximeter are not reliable. Okay, so our prerequisite is minimum 0.4% of the PI should be there to make it reliable. That saturation, that heart rate, to make it reliable, at least 0.4%. But मैसिमो नाम की एक कंपनी है, मैसिको नाम की कंपनी है, उन्होंने अभी ऐसा पल्स ऑक्सीमीटर इन्वेंट किया है कि उसमें 0.2% भी पीआई रहेगा, स्टिल द वी आर गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ पल्सेस, गुड अमाउंट, वी कैन रिलाई ऑन द सैचुरेशन. थोड़ा कॉस्टली है बट इट्स अ गुड कंपनी. एंड दैट प्लेट का ग्राफ जितना स्ट्रेंथ रहेगा उतना that patient have the good PI. So this is the various waveforms, wave patterns. First wave pattern is the normal signal that we get on the pulse oximeter. Second is that there is hardly any amplitude, hardly any strength. It is seen in the patient with shock, with poor perfusion. Just hardly any graphs are there. And sometimes we are in the busy NICU, continuous alarms are there, and then we will get that noise artifact. Noise artifact, like it's a tooth pattern, like it's atrial fibrillation. You will get the artifacts, like tooth artifacts, like that. We will see get in the on the graph. And sometimes we routinely see that fourth wave is that sometimes baby moves his hands or legs, and suddenly that saturation is showing on abhi 100%, like them suddenly it drops to 70%. Baby is being absolutely fine and okay, and that saturation is showing 70-80. But if you see the graph on that pulse wave pattern on the monitor, you will get that motion artifacts, that पहला wave second wave के समान रहेगा, second third के नहीं रहेगा, कोई एकदम से अलग-अलग pattern रहेगा. It is just a motion artifact. In this thing, just we have to wait and watch, allow the baby to calm down, or you can swaddle the baby and let the baby calm down. And then again you have to wait for that getting that pulse signals, and you have to then only you can judge the saturation and pulse rate. So next thing, so your pulse oximetry have the two parts. One is the monitor that we already seen. Second part is the probe, and probe have the two parts. One is the light emitting diode, and second is the light detector. So in which you have to insert the finger, and from one side, एक simple principle है कि एक ऊपर के साइड से जहां से हम पल्स ऑक्सीमीटर को लगाते हैं बेबी को, एक रेड लाइट आना चाहिए. रेड लाइट आता है तो वहां से रेड लाइट वो अपने फिंगर से ट्रांसमिट होके सेकंड पार्ट ऑफ जिसको हम डिटेक्टर बोलते हैं, वहां से रेड लाइट आ जाएगा. एंड रेड लाइट और कुछ आउट ऑफ दैट कंप्लीट लाइट ट्रांसमिट नहीं हो जाएगा वो फिंगर से. सम ऑफ द लाइट इज गेट एब्सॉर्ब्ड इन योर फिंगर. अगर मोर प्रिसाइजली बोलेंगे तो हीमोग्लोबिन में एब्सॉर्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में एब्सॉर्ब हो जाएगा. एंड देन your pulse oximeter do the internal calculation, and then it will give you the final reading. Okay, so whenever you putting the fingers, your LED should facing toward the detector. And probe के side कौन से होने चाहिए? Normally we use the fingers, toes, and sometimes we are also using earlobe, or nowadays in some NICU they are using the forehead probes. So फिंगर टो का किस में यूज करना चाहिए, फोरहेड ईयरलोब का किस में यूज करना चाहिए? नॉर्मली कोई भी पेशेंट में हम फिंगर और टो का यूज करते हैं. फिंगर टोज में यानी पेरीफेरी में हो जाएगा ये. एंड फोरहेड एंड ईयरलोब दे आर मोर नियर टू द योर हार्ट, तो वहां के जो पल्सेशन रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग पल्सेशन रहेंगे. So those babies who are in the shock, we are bad shock on the vasopressors, adrenaline, vasopressin, they have the poor perfusion of the your peripheries. In these babies, you can prefer forehead pulsation, forehead probes. Okay, and when the baby is having quite good perfusion, you can use the finger or toe. But bad babies, shock babies, we will prefer the forehead. So this is the, here we can see that this is the forehead probe, and in last B section you will get the light source emitting the lights, and light detector which sends the light, and it is attached to the scalp. Okay, you will get the light path. Okay,
And normally, second picture is showing our normal NICU baby's picture, that having the pulse oximeter attached to your sole, and third picture showing the your earlobe probe attached to the earlobe. So the principle is of oximetry is very simple principle. जितना भी ऑक्सीजन रहेगा उसमें से, जितना भी हीमोग्लोबिन है उसमें से जितने हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन अटैच रहेगा, उतना परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन वो इंटरनली कैलकुलेट करके हमको मॉनिटर पे दिखाएंगे. सो इन फर्स्ट लाइन 0 hemoglobin are attached to the, out of 10 0 hemoglobin are attached with oxygen. So its saturation will be 0%. अगर 10 में से 5 अटैच 10 में से 5 को ऑक्सीजन अटैच रहेगा तो 50%. कंप्लीट हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन अटैच रहेगा, आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10 को अटैच रहेगा, योर मॉनिटर विल शो द 100%. इट्स अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल, बट इंटरनल कैलकुलेशन करके हमको पल्स ऑक्सीमीटर मॉनिटर पे दिखाता है. सो नाउ दिस नेक्स्ट थिंग, हाउ टू यूज द पल्स ऑक्सीमीटर. हम सबको पता है कैसे यूज करना है, बट स्टिल सिंपल स्मॉल थिंग्स वी कैन मिस. जब भी चालू करते हैं, जस्ट वेट फॉर few seconds, not minutes. Allow it to for internal calibration, then check. Always use proper size probe. Do not fix it too tight or too loose. बहुत लूज रहेगा तो पिकअप ही नहीं कर पाएगा सिग्नल्स. टाइट रहेगा तो प्रेशर की वजह से जो भी इंजरीज होगी, ब्रूजिंग, प्रेशर सोर्स कैन कैन ऑफर. एंड जहाँ पे भी हम बीपी कफ लगा है बेबी को, वहां पे उस हैंड्स को, उस legs को हम will not use that, because it will generate the back pressure on the veins and it will not give the reliable readings on the monitor. And whenever allow several seconds of the pulsometer to detect the pulse and calculate the saturation. बहुत बार हम ऐसा हो जाता है कि हम अटैच करते हैं एंड एकदम से सडनली इरेटिक रीडिंग 70-80 का रीडिंग आ जाता है, एंड हमको लगता है कि 70-80 कैसे है. सो जस्ट वेट फॉर वेव फॉर्म्स. जैसे ही गुड वेव फॉर्म आता है, then only check the saturation and heart rate. Without good waveform, don't jump on the saturation. Okay. Whenever you are getting the false reading, 60-70 है, अगर saturation 60-70 है, heart rate 70-80 दिखा रहा है, तो first check that your clinical judgment. बेबी कैसा है clinically? heart rate, बेबी पिंक है, crying है, activity है, feed कर रहा है, तो don't judge on that parameters. Okay. And whenever you are in doubt about the pulse oximetry, प्रोब को निकालो, खुद के फिंगर को अटैच करो. अगर अपना नॉर्मल आता है तो that instrument is working. Okay. एंड बहुत बार ऐसा हो जाता है कि नर्सिंग स्टाफ एनर्सी में आ जाते हैं, बेबी को सिर्फ सैचुरेशन देख लेते हैं. हाँ, सैचुरेशन अच्छा है, हार्ट रेट अच्छा है, तो हम एक चीज हम नॉर्मली भूल जाते हैं कि हम वी आर फॉरगेट टू सेट द अलार्म सेटिंग्स. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट अलार्म सेटिंग्स. बिकॉज बहुत बार क्या हो जाता है कि बिजी एनआईसीयू में बहुत बार 7-8 बेबीज रहते हैं, कोई बेबी बैड हो जाता है तो हम उस पर बहुत सारे 2-3 स्टाफ वहां जाते हैं, डॉक्टर भी वहां आ जाते हैं. और नॉर्मल केस हो जाता है कि अगर एनआईसीयू में एक दिन अगर कोई बेबी बैड हो जाता है तो उसी दिन दूसरे बेबी को उसी दिन बैड होना होता है. तो अगर हमने अलार्म सेटिंग नहीं लगाया है तो बच्चा डिसैचुरेशन हो जाएगा या ब्रैडिकार्डिया में जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा. So always set the alarms. We will see the alarm setting in the next slide. But always crux is always set the alarm setting. So आप जब भी आपके एनआईसी में जाते हैं, सिर्फ सैचुरेशन और हार्ट रेट देखना, कलर अच्छा है, सिर्फ ओवर लिया, ये आपका काम नहीं है. हमेशा यू हैव टू पुट द, अगर आप आते हैं तो आपकी ड्यूटी में अलार्म की सेटिंग है या नहीं है, हार्ट रेट की और सैचुरेशन की अलार्म सेटिंग लगाई है क्या नहीं है. इट्स आवर पर्सनल ड्यूटी टू चेक द अलार्म सेटिंग. वैसे हमको टेम्परेचर का भी देखना होता है. Okay, so always keep your alarms on. And जब भी हम प्रोब लगाते, continuously प्रोब का साइड चेंज करते रहना है, because to avoid the pressure soreness, bruising, continuously rotate the side of the pulse oximeter probe. So some of the limitations of the pulse oximetry are, sometimes you will not get the adequate signals because sometimes some nail polish is attached to your nails, so it will not allow the signals to pass through the fingers, and it will not get the proper readings. Or sometimes in the dark skin babies, sometimes you have used
some dyes, sometimes with the poor perfusion, you will not get the inadequate signal. Sometimes you will get the false hypoxemia, though there is elevated PaO2, but still you will get the false hypoxemia. And sometimes you get the low readings in patients with right heart failure, or if you if you attach the pulse oximeter to the limbs in which you are monitoring the BP, and still you have attached the pulse oximeter on the same limb, then you will get the low readings. And sometimes you will get the unreliable readings. Unreliable readings you will get in the methemoglobinemia. In methemoglobinemia, there is a refractory hypoxemia. So your saturation is on the 80-85, but actually if you do the PaO2, the PaO2 is okay on the normal side. And in carboxyhemoglobin, there is actual hypoxemia, means PaO2 is on the lower side, but your saturation is on the normal range. So in these two conditions, you will not get the reliable readings with the pulse oximetry. In this patients, you have to go for ABG. So अगर ये प्रॉब्लम्स आते हैं तो इनको कैसे हम टैकल कर सकते हैं? अगर पेशेंट कोल्ड है तो अलाउ वार्म करना चाहिए, वार्म करो, रब द स्किन, or if the baby is in shock, give the fluids. If the baby is anemic, give the fluid, PCV blood transfusion. बहुत शॉक में है, फ्लूइड रिससिटेशन के बाद भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो we have to add the inotropes, dopamine, dobutamine, or adrenaline, and sometimes we have to use the topical vasodilators like glycerin trinitrate creams, and sometimes we have to change the probe site, or we have to change the probe, or sometimes we have to change the machine also. Normally we are changing in our NSU. We are routinely doing all these things. Okay, so अगर ये सब करके भी you are not getting a good, you are not happy with the readings of the pulse oximetry, then finally go for invasive method, that is the arterial blood gas. And arterial blood gas, you will get the PaO2, and along with that you will get the saturation. So what are the indications to use this pulse oximetry? हम कहाँ यूज करते हैं? Whenever you are हमको जहाँ पे भी ऑक्सीजन लगाते हैं, हम कहीं पे भी आपने देखा, अगर जब भी हम ऑक्सीजन चालू करते हैं, हम बोलते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है क्या? और हमने कोविड में भी देखा है कि हमको जहाँ पे भी ऑक्सीजन मॉनिटरिंग करना है, ऑक्सीजन लेवल मॉनिटरिंग करना है, वी आर यूजिंग द पल्स ऑक्सीमेट्री. Similarly, whenever the patient is in shock, we are using the pulse oximetry. And in some patients on the ventilator with having long-term like chronic lung disease, we need a pulse oximetry. Okay, and along with that, whenever you in OT, whenever your baby requiring anesthesia, sedation, respiratory depression, like Gardinal, etc. drugs can use karte, then we need a pulse oximetry. So this pulse oximetry detects the hypoxia and hyperoxia, and both are the dangerous. What is the normal things, normal values? So ABG gives the PaO2 value, and the normal value is 50 to 70 millimeter of Hg, and the saturation value is, in newborns it's between 91 to 95%. In hypoxia, जब भी ऑक्सीजन कम पड़ता है बेबी को, तब PaO2 value will be less than 50, and saturation जो मॉनिटर पे हम देखते हैं नॉर्मली से less than 90%. 90% से नीचे जाता है तो ऑक्सीजन लेवल लो हो जाती है. एंड अगर हम ऑक्सीजन किसी पेशेंट को देते हैं, एंड इफ इसका सैचुरेशन इफ इट इज मोर देन 95%, then it is called as hyperoxia, and both are dangerous. We know that hyperoxia, that ऑक्सीजन ज्यादा देंगे तो बेबी को necrotizing enterocolitis हो सकता है due to the free radicals. It can also cause the retinopathy of prematurity and lots of complication. Hypoxia का ऑक्सीजन कम पड़ता है तो हम already we know that in birth asphyxia, perinatal asphyxia, all the organs are deprived of the oxygen. सबको ऑक्सीजन कम रहेगा तो सबके प्रॉब्लम्स हम बर्थ एस्पेक्ट के बेबी में हम देख चुके हैं. So what will be our oxygen target? So our oxygen target will be between the 91 to 95%. 91 से नीचे जाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा जाएंगे तो भी प्रॉब्लम. Okay, so your alarm limit should be between 9 for saturation. The lower limit of the your pulse oxygen monitor will be 90, and higher limit will be 96. उसके आगे जैसे ही 90 के नीचे जाएगा, अलार्म शुड रिंग, एंड ऊपर भी जाएगा तो भी हमको इन बिटवीन मैक्सिमम टाइम वी हैव टू कीप इन बिटवीन. एंड हमने ये भी देखा है, बहुत सारे स्टडीज बेस्ड है इसके ऊपर. इफ वी कीप द टारगेट, दिस टारगेट, वी विल गेट द गुड न्यूरोलॉजिकल आउटकम along with lesser chances of chronic lung disease and less ventilation days. Okay, similarly for pulse rate,
the lower limit is the 100 per minute and the higher limit is the 160 per minute. ये टारगेट जो सैचुरेशन हमने जो डिसाइड किया था 91 to 95%, it is for babies, just born babies. We have to accept the lower limit, lower ranges. So why we have to accept this lower ranges? Because the baby have in the transition phase. Fetal circulation से outer world का circulation में baby transit होते रहता है, तो fetal circulation में saturation is on the lower side, less than 60%. वो उसी 60%, less than 60% पे ही बेबी का सर्वाइवल हो जाता है. बट आउटर वर्ल्ड को आने के लिए उसका टाइम लगता है. जैसे रेलवे एक ट्रैक से दूसरी ट्रैक पे जाती है तो इट विल टेक टाइम. सो इसी ऐसे ही अगर फर्स्ट 10 मिनट के लिए अगर सैचुरेशन आफ्टर बर्थ अगर कम रहता है तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट. सो अगर just born baby in first minute of life, if the saturation is between 60 to 65%, accept it. No need to start the oxygen. Similarly, at 5 minutes, 80 to 85% is normal, and 10 minutes, 85 to 95% is also normal. So don't rush to start the oxygen in the delivery room just because the baby is cynosed. Just wait, give some time, allow the warm the baby. Okay, if required, do the suctioning, and baby's saturation will gradually increase, and at 10 minutes you will get the saturation more than 90%. So other methods, other uses of the pulse oximetry is we can clinically we will get some clues to the diagnosis of the persistent pulmonary hypertension. In persistent pulmonary hypertension, there are two readings. There are pre-ductal reading and post-ductal reading. Okay. आप नर्सिंग लेवल पे सिर्फ इतना ध्यान रखो कि राइट हैंड में जो रहता है दैट इज अ प्री-डक्टल, and left hand and lower limbs का रहता है post ductal. Ductal means that your aorta is connected to the your pulmonary vein by a duct, that is a ductus arteriosus. अगर our ductus pulmonary vein pulmonary artery carries deoxygenated blood and aorta carries oxygenated blood, but उन दोनों में कनेक्शन रहता है. तो कनेक्शन अगर persistent pulmonary hypertension में राइट लंग्स के राइट हार्ट के प्रेशर ज्यादा रहते हैं, तो एंड इन दिस बेबी देयर इज अ राइट टू लेफ्ट शंट, एंड दैट इज कॉजिंग that deoxygenated blood is carried to the post ductal part. So in left hand and with both the lower limbs, if you are getting a saturation difference of 5 to 10% lower in the left limb and lower limb, and right upper limb 5 to 10% से ज्यादा है right upper limb में, और lower limb में 5 to 10% कम है. In short, if there is a gap of 5 to 10%, then you can suspect persistent pulmonary hypertension, and then you have to send these babies for 2D echo to confirm it. Similarly, there is a labile hypoxemia in the persistent pulmonary hypertension. What is labile hypoxemia? जैसे हमने बहुत बार देखते हैं कि कोई बेबीज रहता है कि थोड़ा भी मॉनिटर का साउंड बढ़ गया तो बेबी सडनली डिसैचुरेट हो जाता है. हम कोई भी इंजेक्शन पुश करने लगी सिस्टर ने, सडनली बेबी डिसैचुरेट हो जाता है. हम FiO2 का FiO2 सडनली हम 5-10 से कम कर दिया तो बेबी सडनली 10-20 से डिसैचुरेशन हो जाता है. सो दिस इज अ hypoxia is there, hypoxia, but it's a labile. बहुत थोड़े हम चेंजेस करेंगे बेबी एकदम सडनली नीचे आ जाता है. So this is a labile hypoxemia. It is seen in the babies with higher pulmonary pressures. So you will get just the clues, but the confirmation is done. You have to do by the 2D echo. So the last thing that we are using pulse oximetry is the pulse oximetry screening. Like metabolic screening, जैसे हम metabolic screening करते हैं कि हम 5 ब्लड के ड्रॉप्स लेते हैं, कार्ड पे हम भेजते हैं to rule out the metabolic diseases. Similarly, nowadays we are doing the pulse oximetry screening. ये स्क्रीनिंग जैसे हम वो मेटाबॉलिक डिसीजेस के लिए करते हैं, वैसे ये हम pulse oximetry screening to rule out the critical congenital heart diseases. Critical congenital heart disease means those diseases which are duct dependent diseases. उनको अर्ली डिटेक्ट करेंगे तो हम we can early manage the babies and outcome will be the better. So in these babies we are using the pulse oximetry screening. And कब करना है ये pulse oximetry screening? Ideally it should be done after 24 to 48 hours of life. But अगर बहुत बार हम पेरीफेरी में देखते हैं बहुत सारा वर्कलोड रहता है, तो बहुत बार the parents want to discharge within 24 hours. तो अगर हमको we can do the before 24 hours, लेकिन जितना लेट हो सकता है उतना बेटर. फर्स्ट 24 आवर में भी डिस्चार्ज कर रहे तो जितना लेट हो सकता है उतना. Ideally it should be done between 24 hours to 48 hours of life. So what is this pulse oximetry screening?
So in pulse oximetry screening, you have to take the 2 readings. First is the right, that is preductal, that is right upper limb, and that is second is the postductal or lower limb reading you can take. So you have to take the readings. अगर उसमें से कोई भी reading 89 से नीचे आ जाता है, हमने pulse oximeter लगाया, right upper limb का हो या lower limb का हो, any reading less than 89%, you have to send this patient directly to the 2D को, और further investigation X-ray करना है, ECG करना है, 2D को करना है, further evaluation लगेगा. If the baby having saturation more than 95%, दोनों ही इसमें right upper limb में और lower limb में, दोनों इसमें भी saturation more than 95% है, और या दोनों में gap, दोनों में difference less than 3% है, right upper limb का और lower limb का difference less than 3% रहेगा, तो don't do anything. Just no need to repeat the thing. Baby is normal, absolutely fine. Just continue the routine your care. अगर इन दोनों के बीच में का आ गया कि भाई saturation between 90 to 94, इन दोनों के बीच में आ गया है, और if there is a difference of 4% or more, कि right upper limb और lower limb का जो saturation का difference है 4% से ज्यादा आएगा, तो you have to repeat the pulse oximetry after 1 hour. And after 1 hour, if the things like if the saturation is more than 95% in the both the right upper limb and the lower limb, so don't do anything, just wait and watch. Okay, if the saturation is between less than 94%, or the gap difference of saturation is between 4% or more, then you have to send these babies, that it says that this test is failed, you have to send these babies to the 2D को. Okay, so crux is 89% से नीचे आता है, send the baby to the 2D को, 95% से ऊपर जाता है, wait and watch, in between आता है तो repeat after 1 hour. अगर repeat after 1 hour के बाद भी अगर 95% से ऊपर आ जाता है, just wait and just continue the same treatment, that test is passed. In between 90 to 94 के नीचे ही रहता है, and difference is more than 4%, send the baby for 2D को. So this is the how you do the pulse oximetry and pulse oximetry screening. So clean the oximeter cable, wash your hands. अगर बेबी को स्वेडल किया है तो ओपन करो. Dr. Sachin, Yes, ma'am. we need to wind up for the next speaker. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. So thank you. Yeah, Jaisal, you want me to summarize right now or at the end of both talks? It will be nice to summarize now, Prita, in like quickly, because other topic is different. That's why I thought, yeah. It is also fine. Yeah. So it was a very good presentation, Sachin, very applicable at the bedside and very practically based. And I think most of you are doing it regularly, but there are a few points that I would just like to repeat or reiterate what Sachin has told. एक है कि whenever you put the pulse ox, normally you have your regular vitals which are coming on the screen as well. So you can actually counter check when you put your pulse ox by looking at the heart rate that comes on the pulse ox. So normally when you connect it even to your main cardiac monitor, under the saturation there will be a heart rate. So usually you can check that it's giving you a reliable reading. One, based on the same heart rate that is showing on the monitor should come on that. Second, like he mentioned, is the waveform. So the waveform, like the inverted U, you have to watch that very closely before you react ki saturation drop hua hai ya saturations have gone up. Either way, you should look at that. You should also remember that, see, normally in the NICU, hum log pulse ox lagate hi hai. For the kids who are sick, we will be connecting it because we are looking at their respiration or they are sick for other reasons. But two situations that we use in term babies who are normal babies. One, again repeating, is that you use it in the delivery room. So that is now compulsory part of NRP. You have to use pulse ox reading in the delivery room.
Again, like he mentioned, first monitor ko on karo, and uske baad you lagao the, once the monitor starts beeping, that is when you put the probe onto the patient's right hand. Again, you will measure the pulse oximeter readings for a baby who is 2 days old in the postnatal ward also, beyond 2 days, to detect heart disease. So these are the two situations where in a normal baby, normal term baby, you will check saturation. Other very important thing I just wanted to mention is a regular feature, and I think Jaisal, all of you all must be facing, that when we put the saturation probe, we have to change that site every 4 to 6 hours, because you can end up getting pressure sores, you can get peeling, because many times hum log pulse ox lagate hain aur uske upar micropore lagate hain, and then we are not watching the toe jahan pe wo laga hua hai. So it is very, very important to watch that there is no discoloration, no change of temperature, and there is no, sometimes you even find in very extreme preterms, pre-gangrenous changes also can start very fast. So they'll discolor and they can quickly become cyanotic or blackish colored. So keep a constant watch on that. That is one thing to be kept in mind. Where you don't need pulse ox, learn to switch it off. Like abhi you're going to discharge a baby within a day or two, completely breastfed baby getting ready to discharge. You may not need the pulse ox. You can switch it off because it's one additional noise alarm. So try to switch it off. If you can tone down the volume, you can do that. Most of the new monitors allow you to do that. So remember, when you don't need a pulse ox, don't keep it on as well. That will reduce the noise levels in the ICU. Thank you so much. Ruth, would you like to introduce our next speaker? Yeah. Dr. So next we have with us Dr. Sachin Jetlia, who is practicing in Bid. He's the director of the hospital Shri Bal Rugnalaya, and he has practiced neonatology and learned neonatology from KEM. And we're very glad to have you, Sachin. And he's going to cover neonatal hypoglycemia and how to troubleshoot when you check the glucometer readings. So over to you. Thank you, ma'am. Am I audible? Yes, and slides are also visible. Yeah, thank you, ma'am. Good afternoon, everyone. I'm first of all very thankful to Maharashtra Scnnf and all the office bearers for giving me opportunity to speak on this platform. It is always glad to strengthen our own nursing staff, our own staff, which is the backbone of our NICUs, and keeping. I think NNF is doing it since long time. So our today's talk for me is neonatal hypoglycemia, how to do sugars, glucometer monitoring, and all those things. We shall be covering it in a few of the slides. So 4 major components of any nursing care, good nursing care. A baby should be pink, warm, sweet, and calm. So I will be dealing with the sweetness of the baby. Few discussion points we will be seeing through the talk are in how often do you see hypoglycemia. Most of us see hypoglycemia, at least 2-3 babies in a month. Hypoglycemia management is being done in every NICU. Which babies do we get hypoglycemia? How we check sugars in those babies? Do we have hypoglycemia management policy in our unit? When we inform the sugars, what sugars, what levels we inform to our doctor on duty, and what are the common complications we see in hypoglycemic babies? So how often do we see hypoglycemia? In which babies do we see hypoglycemia? Low birth weight babies है, 2 किलो के नीचे है,
प्रीटर्म बेबीज है 35 वीक्स और लेस या लेट प्रीटर्म्स है, उनमें भी हम हाइपोग्लाइसीमिया देखते हैं। स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबीज जो कि 2 किलो के नीचे है, फुल टर्म है लेकिन कम वजन है, इनमें हम हाइपोग्लाइसीमिया देखते हैं। ये हो गए छोटे बेबीज जो वजन में कम है या प्रीटर्म है। सेकंड थिंग, लार्ज बेबीज, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज इन्फेंट जो कि 90% 90th सेंटाइल से ज्यादा वजन है, एंड RH हिमोलाइटिक डिसीज बेबीज। फिर जो मदर्स को कुछ मेडिसिन शुरू है जैसे टर्बिटैलिन, प्रोप्रेनोलॉल, लैबेटोलॉल, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, और सब सिक बेबीज जैसे बर्थ एस्फिक्सिया है, सेप्सिस, शॉक, पॉलीसाइथेमिया, और जो भी बेबीज है जो TPN पे है या पेरेंटल न्यूट्रिशन पे है, इनमें हम हाइपोग्लाइसीमिया कॉमनली देखते हैं, या हाइपरग्लाइसीमिया भी कॉमन। कुछ इनमें से कुछ बेबीज में हाइपरग्लाइसीमिया भी होता है जिनमें हम शुगर मॉनिटर करते हैं। हम हाइपोग्लाइसीमिया को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि जब आपका शुगर, ये आपका सबस्ट्रेट है, अगर आप खाना नहीं खाएंगे या आपके शुगर्स अच्छे नहीं रहेंगे, जो जैसे छोटे बेबीज में आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स दिखेंगे, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन डिप्रेस हो जाएगा, ब्रेन फंक्शन डिप्रेस हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए शुगर ये सबस्ट्रेट है। इन बच्चों में परमानेंट ब्रेन डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। 25 to 50% of newborns with severe recurrent symptomatic hypoglycemia experience permanent brain damage in future. So इनके सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया किसको कहते हैं? जो जनरल सिम्टम्स रहते हैं उनमें हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी, एबनॉर्मल हाई पिच क्राई, एक्सेसिव स्वेटिंग, पुअर सक, रिफ्यूजल टू फीड, ये सब चीजें जनरल सिम्टम्स में आती है, कोई स्पेसिफिक नहीं है इसमें से हाइपोग्लाइसीमिया के लिए। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में हाइपोटोनिया, convulsions, abnormal eye movements, tremors, excessive jitteriness, all those things are there. Cardiovascular symptoms में tachypnea, apnea, cyanosis, pallor, respiratory distress, tachycardia, congestive heart failure, ये सब चीजें दिखती है, पर इसमें से कोई भी चीज आपको हाइपोग्लाइसीमिया के लिए स्पेसिफिक नहीं है। The clinical signs of neonatal hypoglycemia are often non-specific and are associated with other disorders common in neonate. हाइपोग्लाइसीमिया इज ऑलवेज अ बायोकेमिकल डायग्नोसिस, क्योंकि सिर्फ सिम्टम्स है तो आप हाइपोग्लाइसीमिया नहीं बोलेंगे। जब तक आपको शुगर का वैल्यू पता नहीं है तब तक आप उसको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं बोलेंगे। सेटिस्फेक्शन ऑफ 3 क्राइटेरिया इज जनरली फॉलोड। एक चीज है कि आपको सिम्टम्स है या नहीं ये पता होना है, उसके साथ में आपका लो प्लाज्मा ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन मेजर्ड बाय लेबोरेटरी मेथड, एनी सेंसिटिव एंड प्रिसाइज मेथड, और जब आप उसको हाइपोग्लाइसीमिया करेक्ट करते हैं उसके बाद में विद इन सम टाइम पीरियड, मिनट्स टू आवर्स, ग्लूकोज लेवल री इस्टेब्लिश होने के बाद में क्लिनिकल साइंस चले जाएंगे। कौन से बेबीज हम स्क्रीन करते हैं? जैसे ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया है, प्रीमैच्योर लो बर्थ वेट बेबीज, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर्स और सिक नियोनेट्स, इनमें जनरली हम स्क्रीन करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के लिए। कैसे स्क्रीन करते हैं? मोस्ट एक्यूरेट इज लैबोरेटरी टेस्टिंग। आप फ्लोराइड बल्ब में ब्लड सैंपल लो, प्लाज्मा शुगर चेक करो, ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। पर हम बेड साइड सिम्टोमेटिक बेबी है, इमीडिएट मैनेजमेंट करना जरूरी है। उस टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलमोस्ट सब NICU में हम बेड साइड ग्लूकोमीटर रीडिंग्स करते हैं रीएजेंट स्ट्रिप्स से, एंड दैट इज अ स्क्रीनिंग मेथड। एनी शुगर in hypoglycemic range is to be checked by laboratory method, कंपल्सरीली चेक करना जरूरी है, क्योंकि ग्लूकोमीटर रीडिंग्स एक्चुअल ग्लूकोज लेवल से 10 to 20 मिलीग्राम पर DL से कम होते हैं। एस्टिमेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज यूजिंग ग्लूकोमीटर, क्या क्या चीजें इसके लिए लगती है? सोप वाटर, हैंड वॉश, अल्कोहल फॉर स्किन प्रिपरेशन, टेस्ट स्ट्रिप्स, ग्लूकोमीटर और नीडल या लैंसेट। एक वीडियो में हम देखते हैं क्या क्या प्रिपरेशन लगेगा। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्री वार्म करना है हील को।
जब भी आप शुगर कर रहे हैं, शुगर करने के पहले आपको हील को प्री वार्म करना है, इधर लुकवार्म वाटर से, जो कि 41 to 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, या फिर जो वार्म टॉवेल, वार्म गॉज पीसेस है, उससे भी आप वार्म कर सकते हैं। हम ग्लूकोमीटर शुगर कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हैंड हाइजीन कर लो, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस फॉलो करो, स्टेराइल ट्रे ले लो, उसमें स्पिरिट स्वैब ले लो, 26 गॉज नीडल नॉन टच टेक्निक से आप ले लेंगे। टेस्ट स्ट्रिप जो है वो भी आप नॉन टच टेक्निक से लेंगे। इसके बाद में आप हील प्रिपेयर करेंगे। असिस्टेंट जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर आप नॉन टच टेक्निक और असेप्सिस नहीं मेंटेन कर पाएंगे। ग्लूकोमीटर में आप टेस्ट स्ट्रिप डालिए, एक्टिवेट हुआ है या नहीं ग्लूकोमीटर वो देखिए। हील प्रिपेयर करिए, स्पिरिट स्वैप से एटलीस्ट 30 सेकंड्स तक स्पिरिट स्वैप से आप क्लीन कर लीजिए। उसके बाद में आप साइड ऑफ द हील, दोनों में से कोई भी साइड, सेंटर में नहीं करना है, साइड ऑफ द हील में आप 26 गॉज नीडल से, या अगर आप स्टिलेट यूज करते हैं तो स्टिलेट से प्रिक करिए, बोल्ड प्रिक करिए, उससे ब्लड आएगा। प्रेशर नहीं देना है, स्क्वीज नहीं करना है, और असिस्टेंट उसको सिंगल इसमें स्ट्रिप पे लेगा और ग्लूकोमीटर रीडिंग देखिए। इसके बाद में आपको प्रेशर देके, प्लेन स्वैप से प्रेशर देके रखना है 1 to 2 मिनट्स। इसके बाद में आपको स्ट्रिप और जो स्वैब्स आपने यूज किए हैं वो सब डिस्कार्ड करने हैं और हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है। ऑलवेज रिमेंबर, आपको जो साइट है ग्लूकोज चेक करने के, हील्स के साइट है, वो साइड ऑफ द हील है। सेंटर में कैल्केनियम की जगह पे आपको नहीं करना है, इसकी वजह से आपका वेस्कुलर नेक्रोसिस होने के चांसेस रहते हैं, तो साइड्स को करना है। सो पॉइंट्स टू रिमेंबर: क्लीन द साइट विथ स्पिरिट स्वैब और अलाउ इट टू ड्राई। आयोडीन स्वैब यूज नहीं करना है, क्योंकि उससे हायर साइड के शुगर्स आ सकते हैं। डू नॉट प्रिक द मिडल पोर्शन ऑफ द हील, सेंटर में प्रिक नहीं करना है, साइड्स में करना है। और स्क्वीज नहीं करना है ब्लड लेने के लिए, शुगर मॉनिटर करने के लिए, ब्लड के लिए आपको स्क्वीज नहीं करना है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के गाइडलाइंस: सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया लेस देन 40 मिलीग्राम पर डीएल। कब आप हाइपोग्लाइसीमिया कब बोलेंगे? अगर सिम्टोमेटिक है बेबी, कोई भी सिम्टम्स है, तो 40 मिलीग्राम पर डीएल से नीचे आपका हाइपोग्लाइसीमिया है। असिम्टोमेटिक बेबीज में फर्स्ट 4 आवर्स में 25 मिलीग्राम पर डीएल से नीचे, 4 to 24 आवर्स में 35 मिलीग्राम पर डीएल के नीचे, और 24 आवर्स के बाद में 45 मिलीग्राम पर डीएल। ऑलवेज वी शुड हैव अ टारगेट सेट। फर्स्ट 48 आवर्स 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा आपका शुगर होना चाहिए, और सिक और एस्फिक्सिएटेड बेबीज में आप हायर टारगेट सेट करते हैं। Every neonatal nursery, every NICU, SNCU should have a written protocol for neonatal hypoglycemia management. हम मैनेजमेंट का पार्ट कवर करेंगे। फर्स्ट 24 आवर्स असिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया है, फर्स्ट शुगर आपका 25 मिलीग्राम पर डीएल से नीचे आई है, तो आपको डायरेक्टली आईवी ग्लूकोज के लिए जाना है। आईवी शुगर, आईवी डेक्सट्रोज 10%, 2 cc पर केजी, 80 to 100 मिलीग्राम पर डीएल से आपको लगाना है। ये डे 1 के लिए प्रोटोकॉल। अगर आपका शुगर 25 to 36 मिलीग्राम पर डीएल है, आप फीडिंग देंगे, रिपीट शुगर करेंगे 1 घंटे के बाद में। फीडिंग देने के 1 घंटे के बाद में अगर 36 से नीचे है तो आप शुगर चेक करेंगे, तो आप फीडिंग बढ़ाएंगे, रिपीटेड 2 आवरली फीडिंग देंगे। अगर आपका शुगर, सेकंड शुगर 36 से ज्यादा है तो एवरी 2 आवरली फीडिंग देंगे, मॉनिटर करते रहेंगे। अगर मोर देन 36 है फर्स्ट शुगर ही, तो आप फीडिंग कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने ऑलरेडी देखा है कि हम किन बेबीज में स्क्रीनिंग करते हैं: स्मॉल बेबीज, लार्ज बेबीज और डायबिटिक मदर्स के बेबीज। और सस्पेक्ट में जैसे कोई भी बेबी है, सिक है, लिथार्जिक है, पुअर फीडिंग है,
डिफिकल्टी इन फीडिंग है, जिटरीनेस, कन्वल्जन्स, एपनिया, इन सब में हम रिपीटेड शुगर मॉनिटरिंग करते हैं। एनी ब्लड ग्लूकोज लेस देन 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हम हाइपोग्लाइसीमिया करते हैं। हर यूनिट में कुछ पॉलिसी बनाई हुई रहती है, जैसे हमारे यूनिट में 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का प्रोटोकॉल है, हम वो यूनिट फॉलो करते हैं। हर एक एनआईसीयू में अपना एक प्रोटोकॉल रहेगा कि यहाँ पे हम इस शुगर के नीचे मैनेज करेंगे या ट्रीट करेंगे। 24 आवर्स के बाद का बेबी है और शुगर्स 25 और 45 के बीच में है बट असिम्टोमेटिक है, तो हम क्या करते हैं, फीडिंग देते हैं। 1 घंटे के बाद में हम रिपीट शुगर करते हैं। अगर 45 से ज्यादा आती है तो हम मॉनिटर करेंगे, प्री फीड शुगर मॉनिटर करेंगे। अगर वो 45 से ज्यादा है तो कंटिन्यू फीडिंग करेंगे। 25 to 45 का अगर शुगर आता है, असिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया लेस मोर देन 25 का हम सोच रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे फीडिंग का और वॉल्यूम भी बढ़ाएंगे। जरूरत पड़ी तो हम मेजर्ड गवाच फीडिंग भी दे सकते हैं। अगर 25 से नीचे कोई भी शुगर सिम्टोमेटिक और असिम्टोमेटिक रहेगा तो हम आईवी ग्लूकोज के लिए जाएंगे। अगर ग्लूकोज लेस देन 25 है या सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया है तो हम बोलस देंगे 2 cc पर kg, 10% डेक्सट्रोज आईवी ओवर 5 मिनट्स और शुगर और मेंटेनेंस ग्लूकोज लगाएंगे एज पर प्रोटोकॉल GDR ऑफ 6 to 8 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर मिनट और रिपीट शुगर करेंगे 30 मिनट्स के बाद में। अगर वो 45 से नीचे आती है तो हमको इधर GDR बढ़ाना है और या फिर आप पेरिफेरी में काम कर रहे हैं तो आपको आईवी फ्लूइड कंटिन्यू करके बेबी को रेफर करना है। ब्लड ग्लूकोज अगर 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा आता है तो आपको ग्लूकोज इन्फ्यूजन कंटिन्यू करना है, रिपीट शुगर मॉनिटरिंग करनी है और ग्रेजुअली जैसे शुगर्स अच्छे आ रहे हैं तो आपको फीडिंग इंट्रोड्यूस करना है, ग्रेजुअली आईवी फ्लूइड टेपर करने हैं और जब आपके शुगर्स आप ऑलमोस्ट फुल फीड पहुंच जाते हैं, आईवी फ्लूइड डिस्कार्ड हो जाता है और 2 शुगर्स फुल फीड पे अगर आपके अच्छे आते हैं, प्री फीड शुगर्स मोर देन 50 आते हैं तो आप मॉनिटरिंग स्टॉप कर सकते हैं। ओरल फीडिंग पे आपको रिपीट शुगर करना है 1 घंटे के बाद में। आईवी फ्लूइड्स अगर आप फुल आईवी फ्लूइड्स पे है, सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया है तो आपको आईवी फ्लूइड लगाने, मेंटेनेंस आईवी फ्लूइड लगाने के हाफ एन आवर के बाद में शुगर रिपीट करना है। अगर शुगर्स मेंटेन नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या क्या करना है, एक तो आप GDR बढ़ा सकते हैं, आप आईवी साइड चेक करेंगे, आईवी एक्स्ट्रावाइजेशन है या नहीं ये चेक करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज वन ऑफ द कॉजेस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, आपका आईवी आउट है, इंट्राकैथ आउट है। सेकंड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड हैव अ लेबल। जैसे आप ज़्यादा ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन बनाए या फ्लूइड बनाए हैं उसमें कुछ एडिटिव्स है तो आपके पास में सब आईवी फ्लूइड्स को लेबल रहना चाहिए जिसपे पेशेंट का नाम रहना चाहिए, प्रिपेयर कब किया है उसका डेट रहना चाहिए, वो कब आपको एक्सपायरी डेट क्या है उसका वो टाइम रहना चाहिए, किसने प्रिपेयर किया वो रहना चाहिए, जब आपने फ्लूइड शुरू किया है और आपके कितने आवर्स में कितना फ्लूइड जाना चाहिए, स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम उसका रहना जरूरी है, फ्लो रेट रहना जरूरी है, उसमें क्या क्या ड्रग्स आपने ऐड किए वो रहना जरूरी है, हर चीज का स्ट्रेंथ रहना जरूरी है। जैसे आप 5% का इतना ml लिए है, 10% का इतना ml लिए है या 25% का इतना ml लिए है वो रहना, कैल्शियम ऐड किया हुआ है, ये सब चीजें आपको इस पर रहना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आपका ड्यूटी चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट स्टाफ आएगा और आपका आईवी फ्लूइड लेबल नहीं रहेगा तो क्या फ्लूइड चल रहा है या क्या फ्लूइड बनाया गया है वो प्रॉपरली आपको नहीं समझ में आएगा। तो लेबलिंग ऑफ द आईवी फ्लूइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हाइपोग्लाइसीमिया मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट है, जब आपका ड्रिप खत्म हो जाएगा, जो टाइम लैग रहता है ड्रिप खत्म होने के बाद में नया ड्रिप प्रिपेयर करके लगाना वो मिनिमाइज करना जरूरी है। ड्रिप खत्म होने के पहले आपका नया फ्लूइड रेडी होना जरूरी है। सम इन्फेंट्स माइट रिक्वायर हायर ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन, जैसे किसी को 15% 20% शुगर लगती है या 12 to 15 ऑफ GDR लगता है तो ऐसे बेबीज में हमको सेंट्रल लाइन प्लेस करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि इंट्राकैथ से हाइपरऑस्मोलर ग्लूकोज की वजह से आईवी एक्स्ट्रावाइजेशन होने के चांसेस रहते हैं। हमको जैसे अगर 5% या 10% ग्लूकोज पे आपका बेबी शुगर्स मेंटेन नहीं कर रहा है तो आपको
डिजायर्ड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन का फ्लूइड कैसे बनाना है। इसके लिए एक फॉर्मूला है 5x - 25। हम कुछ फ्लूइड्स कैसे बनाते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे हमको 12.5% सोल्यूशन बनाना है, तो 5x, x वैल्यू हो गई 12.5% हमको बनाना है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 12.5 माइनस 25, तो ये हो गया 37.5 ml आ गया। तो ये 37.5 ml आपका 25% डेक्सट्रोज लेना है। ये टोटल हम 100 ml फ्लूइड बना रहे हैं, 100 ml का फॉर्मूला है, और बचा हुआ जो है 62.5 ml वो आपको 5% सोल्यूशन लेना है। तो दिस विल कम एज अ, ये 100 ml जो आपका बनेगा वो 12.5% सोल्यूशन बनेगा। सिमिलरली आपको अगर 15% सोल्यूशन बनाना है तो सेम थिंग, 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 25, तो आपका 50 ml 25% आ जाएगा और 50 ml 5% एक्स्ट्रा आ जाएगा, एंड विल मेक 100 ml ऑफ 15% सोल्यूशन। ऐसा एक चार्ट आप NICU में ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख सकते हैं। 100 ml का फ्लूइड अगर आपको 11%, 12%, 30%, सो ऑन टू 20% अगर आपको बनाना है तो आपको कैसे बनाएंगे इसका एक चार्ट आप रेडी भी करके रख सकते हैं, NICU में आप स्टक करके रख सकते हैं। GDR कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम जनरली जब डॉक्टर्स बोलते हैं तो GDR ऑफ 6 लग रहा है, 7 लग रहा है, ऐसे हम जनरली मेंशन करते हैं। तो आपका जो फ्लूइड चल रहा है ml पर kg पर डे मल्टीप्लाइड बाय डेक्सट्रोज परसेंटेज, 10% चल रहा है, 12%, 12.5% चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, मल्टी डिवाइडेड बाय 144। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर GDR कैलकुलेशन। जैसे आप एग्जांपल लेंगे, आपका 100 ml पर kg पर डे से आपका फ्लूइड चल रहा है और 10% डेक्सट्रोज चल रहा है, तो आपका GDR आ गया 7%। इस पार्ट में हम नहीं जाएंगे। परसिस्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया, क्रिटिकल सैंपल, अगर आपका शुगर्स कंटिन्यूअसली लो आ रहा है, आपने ऑलरेडी 12 GDR रीच कर लिया है, तो हम जनरली क्रिटिकल सैंपल कलेक्ट करते हैं और लैब को सेंड करते बिफोर गिविंग नेक्स्ट लाइन ऑफ मेडिकेशंस लाइक स्टीरॉइड्स। सो ये जस्ट अ पार्ट टू कंप्लीट हाइपोग्लाइसीमिया मैनेजमेंट के लिए मैंने डाला था। So take home message is hypoglycemia is a biochemical diagnosis. Always inform any sugar less than 50 milligram per dl to doctor on duty. Any sugar less than 45 milligram per dl and on sugar whenever you document hypoglycemia. Always check IV site for extravasation and always have a written hypoglycemia management policy in your SNCU or NICU. Thank you. Very well covered, Sachin. Very nicely covered. So I don't have many points to add, but it is important that remember, like earlier we used to react to sugars less than 45 or 47 based on what your unit is following. But now we have to keep remembering that after birth, that low sugar is very important for the baby to start off the normal metabolism of all his gluconeogenic and glucogenic hormones. So very important to remember that we don't need to react to every low sugar, especially in a normal term baby, especially after birth in the first 24 hours. The baby has enough stores to maintain the sugars normally for supply in the brain. So, I think somebody has to mute. Yeah, so important thing like you mentioned also is where you prick the heel. Do not forget to warm the heel before you prick, because if you do not warm, you will end up taking multiple pricks because you are not able to get it the blood drop in the first prick. And more pricks means more infection. So do not forget the chance of sepsis. Never prick in the center where the bone is there. You can have calcinitis, you can have injury of the bone, especially in small preterm babies. Again, like I mentioned in saturation, we have to think also when to stop the monitoring. So sometimes in preterms, we write as 8-hourly or 12-hourly monitoring. But as they get older, just remember on rounds to ask your doctors
whether we still need to monitor sugars or not. Remember that what you're doing by the sugar monitoring is actually helping the outcome of the baby, because low sugars can lead to severe brain damage in the future. So it's very important at the same time to measure sugars when you are asked to measure it. I think that's it from my side. I think we can take questions if we have any. So it looks like right now we don't have any questions. And so yeah. There are comments from the chat box. So basically, there are various ways of mixing the dextrose in preparing 12.5. So some people like to use the formulas, some formulas, which is fine. So your preference of sugars, overdoing and underdoing. Okay, Dr. Jaisal, is there any other question? No, I don't see any other question, Dr. Ashish. Okay. Okay. So then I would like to thank all the speakers, Dr. Sachin Jetli and Dr. Sachin Dule, for sharing their vast experience in both in management, pulse oximetry, as well as sugar monitoring in the babies. Because as you know, hypoglycemia and dangerously low levels of sugars can lead to permanent damage to the brain if not treated. And I also like to thank our expert, Dr. Preeta Joshi, for her expert comments and giving us important feedback. So with this, I'll just like to announce that for the next week, that is on 22nd of April. So we have another CNE program where we'll be discussing danger signs in a newborn and what exactly to watch for by Dr. Sunil Sheth. And second talk will be on nursing care plan, diagnosis, interventions, and management of neonatal jaundice. So both are very practical, useful, and commonly encountered problems. So I hope all the viewers will join next time, and we'll have another wonderful session just like today's. So I'd like to, with those remarks, I would like to close the session. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.